Welcome back to the business vocabulary lesson part 2. Well, in part 1 we have already seen so many vocabularies that we got to and we have to modify to the what? Business vocabularies. And in this one too, we are gonna see 20 vocabularies that are pretty common we are using every day. ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली जो भी इंग्लिश सीखे हुए हैं उसी इंग्लिश को कॉपी पेस्ट कर देते हैं फॉर्मल सिचुएशन में, एंड ये चीज आपको नहीं करनी है. In order to get the promotion, in order to really to get higher level of achievements in your life, you have to change your normal vocabularies to these vocabularies. आइए देखते हैं कौन कौन से vocabularies. चलिए. Okay, so in this image, one is wearing very casual dress and the other one is wearing very formal type of dress, right? तो ऐसे ही मैंने आपको बताना है एक इनफॉर्मल उसकी फॉर्मल वोकैब, राइट, ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन फील हो, मतलब पता चले कि एक्चुअली में इस वर्ड को इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. आ जाइए देखते हैं. फर्स्ट वन, गिव अप. Well, give up is a phrasal verb, right? And I have already mentioned that do not use phrasal verbs because these are not supposed to be used in the formal situation. Then what? Let me tell you. Quit. आप quit यूज करें. जैसे आइए एग्जांपल देखते हैं. I was trying to quit smoking at the time, not give up or give up. ठीक है, यूज नहीं करना है. नेक्स्ट वन, आइडिया. वेल, जो कंपनी कहती थी गेट एन आइडिया सर जी, गेट एन आइडिया, वो तक बैंक करप्ट होने वाली थी, राइट? तो आइडिया आप तो छोड़ दीजिए, नहीं तो ये भी वर्ड बैंक करप्ट ही हो गया, ऐसा समझिए फॉर्मल वोकैब में. तो आपको यूज करना है नोशन. ओके, नोशन. आइए देख लेते एग्जांपल. ही वाज, ओ माय बैड गाइस, इट वाज इट, राइट, नॉट ही. सो इट विल बी it was some pretty strange notion. Notion means जो आइडिया दिया है, जो आइडिया है, राइट, या जो बिलीव्स है. सो इट was some pretty strange notions, thoughts, राइट. आ जाइए नेक्स्ट. नीड. नीड मीन्स जरूरत. नहीं, नीड नहीं यूज करना. रिक्वायर. इन अ फॉर्मल वे वी से रिक्वायर. एग्जाम्पल, दीज पेट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ केयर एंड अटेंशन. ठीक है, नॉट नीड बट रिक्वायर. ओके, आ जाइए नेक्स्ट. सीन. सीन, राइट, सीन का मतलब दिखना. हाँ, सी सॉ सीन, तो उसकी जगह आप यूज करेंगे ऑब्जर्व. ऑब्जर्व. सी, आई ऑब्जर्व्ड दैट ही इज नॉट वर्किंग हार्ड. मैंने ऑब्जर्व किया मीन्स केयरफुली. जब भी किसी चीज को आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, ट्राई टू यूज द वर्ड ऑब्जर्व. ठीक है, आई ऑब्जर्व दैट ही इज नॉट वर्किंग हार्ड. ठीक है, अच्छा है, राइट. नेक्स्ट वन, थैंक्स. वेल, आई लव इट most of the time, but still you can sometime use or substitute the word gratitude. How? Let me give you an example. I would like to express my gratitude, or I would like to express gratitude to the staff for their patience, right? So in this way you can really thanks to someone by saying gratitude, by using the word gratitude. Next one, job. Okay, do not say my job is teaching, my job is like this. Oh, that's truly a bad one. So you got to say my occupation. What are you gonna say? My occupation. So he is a writer by occupation, right? Next one, call on. Well, what is the meaning of call on? So call on का मतलब होता है visit करना, right? किसी के पास जाकर विजिट करने को हम कॉल ऑन कहते हैं, बट क्योंकि वो फ्रेजल वर्ब है इसलिए उसको ओमिट करना है. उसकी जगह यूज करेंगे आप विजिट. एग्जाम्पल, आई एम लिविंग अर्ली टुमारो टू विजिट अ फ्रेंड, राइट. सो स्पेसिफिकली विजिट को यूज करें, ना कि कॉल ऑन को, जब भी आप विजिट करने की बात ही कहते हैं. तो आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं. टू पुट अप. वेल, पुट अप मीनिंग व्हाट? मीन्स टू टॉलरेट, राइट, टॉलरेट करना, बट क्योंकि फ्रेजल वर्ब है ओमिट कीजिए. देन टॉलरेट करना, राइट, जैसे कि मैंने बताया. आइए देख लेते हैं टेंस. आवर टीचर विल नॉट टॉलरेट बैड ग्रामर. आई will really tolerate. Do not worry about that because मुझे पता है grammar mistakes करेंगे तभी सीखेंगे. Our teacher will not tolerate, so do not say not put up, right? That's not gonna make like very formal in a very formal situation, you know. That's sensible, right? So इसका use करें आप. आ जाए next. All right. Do not say that. You got to choose acceptable. What? Acceptable. All right. That is acceptable. See here. It was an acceptable performance, right? It was an all right performance. No, it was an acceptable performance. Next one, I think. Well, I have got a lot of nice expression for that. In my opinion, or in my point of thoughts, or in my, point of views, we say that like that.
ठीक है. So there are, as far as my thoughts are concerned, you can say that too. In my opinion, is pretty common, so you can use, but do not say I think, right? So when you say I think, it seems like, you know, you are actually having a very, you know, authority of declaring something, right? आपका ही command सबसे ज़्यादा important है. तो I think no, I don't choose that one. Okay, example. In my favor, my bad guys, opinion, right? So in my opinion, chocolate is the best flavor of the ice cream, right? So choose this one, right? Next one, from. Well, in some of the context, not all, you can choose, you can substitute from by on the behalf of, right? For example, she spoke on the behalf of the other candidate, not from the other candidate, okay? That is even not gonna make sense. Well, वैसे from काफ़ी common आप use करें, कोई इसको formally change करने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है, but still on the behalf of आप बोल सकते हैं कई context में, तो आप याद रखना, ठीक है? आ जाए, देखते हैं next. Give यानी देना. That's bad. So you will be saying provide. I provided the assistance, not I gave the assistance, right? For example, the school gave new uniforms for the band. No. The school provided new uniforms. ठीक है, तो यहां पर substitute करना है, give नहीं लिखना है. Okay, आ जाइए next देखते हैं. Settle for. Okay, to settle for means what? Means choose करना. Well, choose भी सही नहीं है. Well, frankly speaking, I mostly prefer to use select. आप select use करें, ना कि choose. But settle for means किसी चीज को select करना, एक टाइप से settle हो जाना, right? उस चीज पे like you know decisively आप उस चीज को consider करते हैं. So do not use that. You can use he chose to be a poor, not he settled for a poor, right? So some context settle for change करके आपको क्या करना है? Choose या select, right? So he chose to be a poor, मतलब उसने poor रहना खुद choose किया उसने, ठीक है? Next one, want. Want, desire. Okay, I love this vocab. Example: she might not desire him because he doesn't look good, right? So want, desire का मतलब want. So I love this vocab as well as this example, so I've just given to you, provided to you. Okay, anyway, nevertheless, that's a very common one. काफी अच्छा लगता है, काफी ट्रेंडी साउंड होता है और डिफरेंट भी, राइट? तो इसका यूज करें आप. नेवरथलेस, एनीवे, बट डू नॉट से एनीवेज, दैट्स रॉन्ग. एग्जांपल: द टेस्ट वाज वेरी डिफिकल्ट, नेवरथलेस, एनीवे, राइट? आइए नेक्स्ट देखते हैं. लेट मींस परमिशन देना, राइट? सो यू कैन यूज परमिट, राइट? सो परमिट, नॉट परमिशन, नॉट लेट, बट व्हाट? परमिट. एग्जांपल: द रेगुलेशंस डू नॉट परमिट मच फ्लेक्सिबिलिटी. Okay, the regulations do not permit much flexibility. Next one, hopeless. Okay, hopeless means waste. जिस चीज में हमें कोई होप ही नहीं दिखता है, right? तो उसको हम बोलेंगे futile. I love this vocab. Example: he kept making futile attempts, मतलब hopeless attempts जिसमें कोई होप ही नहीं था, because he was angry, क्योंकि वह गुस्सा था. I love this one. Okay, so tell me on the comment section, do you love or not this one? Keep. Okay, to keep something, to preserve. Okay, to preserve. Example: the tonsil was well preserved. The tonsil was well preserved, right? Next one, blow up, explode, blow up, हैरान हो जाना, right? हम बोलते हैं ना, my mind has just blew up, right? So we can use explode in a very, because that's a very formal one, like informal one, sorry, because phrasal verb है, ठीक है? A police officer was killed when his car blew up, right? Explode हो गया. आ जाइए next, whole, right? So use what? Entire. Example: his behavior disturbed the entire class, not whole class. Okay, so here were all the 20 vocabs that we have seen and we got to modify it right now guys. ठीक है, आप मुझे बताओ आपको सबसे ट्रेंडी, सबसे बढ़िया कौन सा लगा, और आप क्या ये एडवांस्ड वोकैबुलरीज या फिर फॉर्मल वोकैबुलरीज यूज करते आए हैं, और करते आए हैं तो कौन सा, प्लीज कमेंट करके बताइए. एज वेल एज गाइस, नाउ यू गॉट टू शेयर दिस वीडियो टू योर कॉलीग्स, योर फ्रेंड्स, योर मेंबर्स, योर पार्टनर्स,
everyone so that they could get the job or they could get the promotions in their own field work, right? Thank you so much for watching this video so far. ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फॉर्मल इंग्लिश और बहुत सारी इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस टॉपिक्स को पाने के लिए. Thank you so much. Bye bye.